So it was World Theatre Day just the other day, and a very beautiful message. And I was just got some messages from my theater friends. As you all know, I also am into acting, so there's a theater group, and we've done plays together and all that stuff. So, um, the interesting thing is this dream about theater came the night before theater day, and then in the morning I saw messages from my director, and she was telling about a message from Peter Sellers, who is a great actor, a message to all actors. But it was that previous night that I got this dream, and the dream was all about theater. It was just I don't know how, I didn't even actually remember कि ये theater day है कल. तो तो ड्रीम में ऐसा हुआ कि एक नया प्ले का हम रिहर्सल कर रहे हैं, और मैं जो रोल कर रहा था वो था हनुमान का रोल. And the play was centered around Hanuman. It wasn't, Ram was not the central character in this play. Hanuman was the central character. And the whole script, मतलब कभी कभी ये होता है ना कि सपने थोड़े थोड़े से याद रहते हैं, बट दिस पर्टिकुलर ड्रीम इज सो क्लियर एंड सो, आई मीन आई रिमेंबर एवरी सिंगल सीन, एवरी डायलॉग. तो उसमें बात ऐसी थी स्क्रिप्ट में कि अम, अ, कि हनुमान का जो अंतर का जो भी घर्षण, कॉन्फ्लिक्ट्स, थॉट्स, द इनर लाइफ ऑफ हनुमान was the topic of the play. So जो बाहर की कहानियां हैं तो हमने सब ने सुनी है, but what was his inner state of mind, what was his inner thoughts and inner conflicts and inner questions that he was, because जो कैरेक्टर, जो हनुमान का कैरेक्टर है, उसको बाहर से तो हमें ऐसा लगता है कि इज क्रिस्टल क्लियर, इज जस्ट यू नो कंप्लीटली ओपन एंड पावरफुल बीइंग एंड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड but I'm sure even Hanuman had his inner dialogue and his inner life. जो inner life है उसको देखना था. तो उसमें ऐसा हुआ कि we were discussing certain things about his own questions for himself, कि बाहर से तो okay, 100% in surrenderfulness to Shri Ram, I mean a complete innocence, complete 100% surrender. बट क्या कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं हुआ होगा उनको कि what about me, you know? What about this body, this Hanuman, what about his life, and what about all that? तो कभी तो प्रश्न हुआ होगा. So then it was so interesting कि we were discussing कि ऐसा अगर हमें करना है, then हो सकता है कि ऐसी कोई हम बात छेड़े तो जो हनुमान के भक्त है, they might feel uh, offended कि ये he is a complete surrender की जो मूर्ति है, उसको आप कैसे ये question mark लगा रहे हो. Then what we said is the only way to do it is to do it as if it's a dream. तो अगर ड्रीम में हनुमान जाकर ये सवाल पूछते हैं राम को कि व्हाट अबाउट मी एंड व्हाट अबाउट माय लाइफ एंड all that, then it would not be offensive to anybody, because it is simply a dream. It's simply a dream. So in a dream, anybody can have any thoughts. You're free to do anything, think anything, and nobody will have any issues with that. So so we are discussing कि okay, stage पे ये dream का depiction कैसे करें, because film में, movie में it's easier, you can create an imaginary things and all kinds of things, but stage पे कैसे करना है, because this was going to be a play. so the funny interesting thing is I actually woke up in that dream. So instead of Sanjiv, the actor playing Hanuman, this mind body Sanjiv actually became awake. And I asked myself the question कि ये भैया ये ड्रीम सीक्वेंस करना है,
तो इसको कैसे किया जाए. And by that time I was not fully awake, but I would say mostly awake. I knew that ये dream में ये मसला है, ये challenge है, but I myself was quite awake कि ये dream में ये problem है, but how to solve it I was thinking in my sleep. And so I came up with one idea that okay, that Hanuman and Sri Ram fall asleep, you create a night scene and they go to sleep, go to bed, and you create a like a form of a blanket where you can see the silhouette that the person is sleeping, and then the actor slides out from under the blanket and you can still see the sleeping form, and now they are wearing different clothes than what they've slept in, and they stand up, and that will be make it clear that this person is still sleeping, and and the clothes are different, the colors are different. Hanuman is wearing now an orange aisi kashti aisa kuch, and Ram is in some other clothes, so then that would be clear, and because you can still see the sleeping forms in the blanket on the stage, so then it will be clear it's a. And so I told the director, so I went, this is the most funny part, I went back in the dream. And this Hanuman character is now talking to the director and presenting this idea. Why don't we do it like this? That this is because this will solve the problem of how to create the dream on stage. And so Hanuman has this conversation with her name is Rashi. So this director and Hanuman are having this conversation and says, "ऐसा करते हैं तो कैसा होगा?" And she says, "Yes, that will be perfect. We'll do it that way." And then the rehearsal continued. And so this is, and then I, of course, in the morning I sent Rashi a message कि ऐसा ऐसा पूरा ड्रीम मैंने डिस्क्राइब किया, ये हुआ है. So she says, yes, sounds like it's time to create another play now. So, but that's a little bit challenge. She's moved to Bangalore, but we'll figure out something. आजकल तो सब virtually होता है, virtual rehearsal करके एक play बना ही देंगे. Hanuman's inner turmoils, inner questions. But it'll be an interesting thought because we assume that there is only one side to a person, but it is never that way. Every being has multiple facets, multiple aspects, and his innocence and surrender fullness was one aspect, but I'm sure there are others. So exploring that will be interesting. Um, oh, Supriya is on the line. Maybe she can thank us all in person now. Let me see if I can. Hi, Supi. So listen, we are on open door and I have not posted your video, so you can just thank everyone in person. That's okay. Just keep it on you. You're ready? Here you go. I'm going to turn the camera. Here you go. Yes, Supriya, guys. Hi, Supriya. Sorry, I have forgot. But related, happy Listen, birthday. okay. Yeah, thank you, Pratibha Ben. Okay, go ahead, Supriya. Yes, everyone says welcome. You can't hear them because I'm on headphones. So I'll talk to you after in about for 30 minutes. Okay. Bye. Oh, can we see Phoenix? Everyone say hello to Phoenix. Hi. Hi. Hi, Phoenix. You are right. Everyone knows your sentence about, how you say you are right. Everyone Right. knows that. Everyone knows that. You are right. You are saying is always right. Yeah. Okay. Bye, Baba. Mwah. Bye. See you. Talk to you soon.
So yeah, You know, Sanjivji, हाँ, you are right is a mantra by Sri Ji of Khopoli Ashram. is it? He says, जो भी मेरे से बात करता है, I always say you are right. He's saying Oh, once a client came to him, he's a lawyer also, and he's saying he went on complaining about his wife. correct. And every time I only told him, you are right. And he was Right. so impressed. He went and told his wife, he's not only a lawyer, he's superb and all. You also go, also you are right for every complaint. And Right. he's saying that's the best way to get on in the world. Exactly, exactly. And we just stumbled upon this mantra because Phoenix, my granddaughter, she has this, she has this way. Whenever we are playing or something, and you say, "Oh, we should do this," and she just automatically says, "You are right, Dadaji. You are right. Let's." There's no conflict. There's You no are conflict. agreeing with every time. Yeah, It's yeah. So really. in fact, last year I think you I'm were not going there. to attend his. I'm going to attend his Guru Seva Shibir, Okay, GSS, from okay, 14th to 17th on same thing. Who am I? To okay. find out I am that. Wonderful, wonderful, wonderful. Enjoy. So yeah, तो we had a मैंने satsang last year. यू आर राइट का मैंने हिंदी अनुवाद कर रखा है। सही बात है, सही बात है। अब सही। होता यह है कि घर में जैसे टीवी देखते रहे या अभी आपका सेशन अटेंड कर रहा हूँ, वाइफ कुछ बोलती रहती हैं तो मैं बोलता हूँ सही बात, सही बात है। अब वो कल उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ सही बात है, सही बात है। वो भी सही बात है, आप तो सुनते भी सही बात है। एग्जैक्टली यू आप आर सही राइट। है। बड़ों को थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। आप सही है, ये भी सही है। सो no, so the interesting part, we have talked about this lucid dreaming. एक बात की थी हमने कुछ महीनों पहले अबाउट लूसिड ड्रीमिंग कि ड्रीम में अगर आप जानबूझकर उसकी दिशा बदल सकते हो, देन दैट इज द स्टेट बिटवीन ड्रीमिंग एंड अवेक. So you're not fully awake, you're not fully dreaming, but you are awake enough to know it's a dream, and you're involved in the dream enough that you don't wake up, and you simply are able to turn the direction of the dream. So which is exactly what happened in this Hanuman sequence कि जो जहाँ जा रहा था वो थोड़ा सा direction उसका मुड़ गया because of that semi awake state. And that is what this whole, the final understanding of this whole oneness is, that is to not only हम जाग जाए कि ये जो हमने सजाया है, ये हमने ये जो दुनिया सजाई है, बनाई है, with all these people and all these things and all these millions of colors, ये जो बनाई है हमने, ये एक ड्रीम है. तो तो so first step is realizing it's a dream. We know now it's just creation. It's just a creation. There is no physical reality except this dream that's happening in the mind of the dreamer, and it appears to be real. But just as in a dream everything appears real, there is no solidity, no actual reality to it. It is only the experience of whatever is happening. So that is the first step. The second step is to realize who the dreamer is. Who is the dreamer? So वो ड्रीम में द ड्रेम्ड कैरेक्टर जो हनुमान है, जो डायरेक्टर है, दोज आर नॉट द ड्रीमर, दे आर इन द ड्रीम. They are characters in the dream, but they are all, what is the common element of all of those characters? All the characters in the dream, राम थे, सीता माँ थी, और ये डायरेक्टर थे, और ये हनुमान थे, और सारे जो कैरेक्टर्स है उसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है?
Exactly. Common denominator वही है कि they are all part of the dream that this body mind is having. They are all part of the same dream. There is no other reality. Everyone part of the same dream. So ये जो ड्रीम चल रहा है उसका ड्रीमर कौन है वो जानना, और उसको जानने के लिए हम यही सपने में हम अपने आप से पूछे, जैसे एक सपने में अगर इफ द कैरेक्टर्स वांट टू नो हु इज द व्हाट इज द हु इज द ड्रीमर, then the only way for the characters in the dream to realize who is the dreamer is to ask each other. If I ask in the dream, if I ask the director ki who are you really, who are you really, then she would say really I am only in this particular dream Sanjivji sitting in a bed, sleeping in bed, dreaming up this dream. If I asked Hanuman who are you really, Hanuman would also give the same answer. मैं तो हनुमान ऐसे ही मैं तो ये नाटक कर रहा हूं वरना मैं तो सोया हूं एक्चुअली. They will all give the same answer. Ram will also give the same answer. Hanuman will give the same answer. Director will give the same answer. So उसी तरह से ये ड्रीम में अगर हमें जानना है कि ड्रीमर कौन है, तो मैं आप सबको पूछूंगा अगर कि व्हाट इज योर रियलिटी. ये सब चेंज होते जा रहा है, लेकिन व्हाट इज द परमानेंट पार्ट ऑफ यू, हु आर यू रियली. And you all give the same answer. I am this awareness, I am this consciousness. I give the same answer. You remember that exercise we did in the retreat. We did that exercise in the retreat that when you describe your character, you all will have different answers. But if I ask who are you and what are the qualities of that, then everyone has the same answer. So we get to know who that dreamer is by going into this inquiry. ये जब इंक्वायरी करते हैं, ये सपने में एक दूसरे को पूछते हैं हम कि कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो मैं, तो उसका जो जवाब आता है वो हमें दिशा देता है कि अच्छा ये जो सोने वाला सपने देखने वाली जो ऊर्जा है वो है, और ये हम सब एक सपने में अपनी अपनी अपना किरदार बजा रहे हैं. तो so that is the second step. Now what is the third step? The third step is this step of lucid dreaming, कि थोड़े से जगे हुए थोड़े से सोए हुए. क्योंकि सिर्फ हम फर्स्ट स्टेप लेंगे कि ये सपना है, तो अच्छा ये सिर्फ सपना है, देन ज्यादा दिलचस्पी नहीं है हमें इसमें. इट्स जस्ट अ ड्रीम, लेट इट गो, वॉट एवर इट डज, वॉट डिफरेंस डज इट मेक. But we have to take the second and the third step. And the second step is knowing who is the dreamer. So that first step is vairagya. It's only a dream. ये क्या मिथ्या है, इस और तो कुछ इसका रियलिटी है ही नहीं. वैराग्य में पहुंच गए. Second step, who is the dreamer? Then we know this oneness, this consciousness is the dreamer. And we reach from vairagya to devotion, to love, to knowing and worshipping and offering and gratitude for this dreamer who is creating this beautiful dream called life. So we reach up to devotion. Bhakti tak pahunch sakte hain. But the third step is the magic. The third step is where the magic is. And this third step is unique to this non-dual understanding. It is also unique to this, what is known as Kashmir Shaivism. It is unique to Krishna Menon, Atmanand. It is unique to Rupert Spira. It is unique to Francis Lucille. It is unique to Sanjivji, and it is unique to each one of you who is part of this journey. This third step. ये थर्ड स्टेप नहीं पता लोगों को, कुछ लोगों को ही समझ में आया है. थर्ड स्टेप. So the third step
वो क्या एक गीत भी है थोड़ी सी जा हाँ वो क्या था वो कहानी रात दैट किशोर कुमार सॉन्ग दैट ओल्ड किशोर कुमार सॉन्ग थोड़ी सी जागी थोड़ी सी व्हाट इज दैट वन पूरी सी जान आहा या थोड़ी सी रह da 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 क्या ठंडी हवा ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल सुना कोई कहानी तो ये सपना ये कहानी दिस लाइफ ठंडी हवा इट इज ओनली यू टेलिंग योर सेल्फ दिस स्टोरी ए मेरे दिल सुना कोई कहानी this is the thought this is the divine thought when divine वो शयन वाली जो मुद्रा है विष्णु की वो सोच रहे हैं ए मेरे दिल सुना कोई कहानी और ये कहानी रची पूरी ये दुनिया की ब्रह्मांड की ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल सुना कोई कहानी लंबी सी एक डगर है जिंदगानी है मेरे दिल सुना कोई कहानी So the second line itself gives you the clue that he's not just talking about any old story. It is a story of life. लंबी सी एक डगर है जिंदगानी कैसे ये जंप ले लिया देखा कोई कहानी सुनाओ तो इट कुड बी एनी स्टोरी बट नो इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ए मेरे दिल सुना कोई कहानी थोड़ी सी रात बीती थोड़ी सी रह गई खामोश ये रुत न जाने क्या बात कह गई थोड़ी सी रात बीती थोड़ी सी रह गई दिस इज दैट स्टेट जहां सपना भी है नींद भी है और जागे हुए भी हो थोड़ी सी रात बीती थोड़ी सी रह गई दैट मैजिक आवर व्हेन you are in the dream and little bit awake and then what is the second antara so this when you are in that state खामोश रुत न जाने क्या बात कह गई मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान मंजिल है अनजानी ठंडी हवा तो दिस इज द क्लू नाउ जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान सो द ड्रीम जस्ट गोज ऑन इट्स ओन मेरी वे बट नाउ इन दिस हाफ स्टेट थोड़ी सी रात बीती थोड़ी सी रह गई थोड़ी सी नींद है थोड़े से जागे हुए हैं उसमें यू नाउ
can ask for कोई भी दास्तां नहीं, ऐसी दास्तां सुना जिसको सुनकर मिले चैन मुझे. Now this is the magic moment of slightly redirecting the dream. In which direction? In the direction ऐसी दास्तां बनाए life की. Let the story of life be such, not just any story. You know, life can have any story, tragic, ये वो खून खराबा, क्या कुछ नहीं हो सकता है. But what are we asking for? Now that you have थोड़ी सी जागी, थोड़ी सी रह गई, उस अवस्था में you want to turn the direction of the story. जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान. मंजिल है अनजानी. Manzil hai Anjani, because we are not looking for any particular goal or a particular destination, but let the story be wonderful. Let the story be nice. Let the journey be wonderful. So this is the state of lucid living. Lucid dreaming हम dream में करते हैं. ये अभी हम जो next step, the third step जो है, is what we are calling lucid living. लूसिड लिविंग में हम जान गए हैं कि ये सपना है, नंबर एक. दूसरा, हम जान गए हैं, वी नो दैट इट इज अ ड्रीम. वी ऑल्सो नो एन इंक्लिंग ऑफ हु दिस ड्रीमर इज. द ड्रीमर इज नॉट दिस माइंड बॉडी. द ड्रीमर इज द वन ड्रीमर ड्रीमिंग दिस होल सीन, दिस होल स्टोरी. दैट वाज स्टेप नंबर 2. Step number 3, we wake up that dreamer a little bit. We wake up the dreamer in us, the one who is dreaming. We wake up that dreamer and say, direct this dream in the direction that jisko sunkar mile chain. Just as in that dream that we described earlier, I go back to the director and say, okay, now do this. And the whole direction changes. So this third step is you bringing that which is the dreamer into the dream through you again. It is still Hanuman talking to the director, but now Hanuman is talking on behalf of the dreamer. Hanuman was talking in that last scene which I described. Hanuman is talking on behalf of this mind body, Sanjiv. It is not Hanuman anymore talking. On behalf of Sanjivji, he took that idea to the director and said, let us do it this way. And that is the whole game of life, of this understanding, is to now act, speak, think, be, and live on behalf of the dreamer, doing everything in life on behalf of that dreamer. And when you're acting on behalf of the dreamer, of course, the dream will be only magical. It will be full of love. It will be full of light. It will be full of joy. It will be full of truth, full of beauty, because that is the natural quality of that dreamer. अगर आप उसके बिहाफ पे बोल रहे हो तो उसकी तो कहानी यही है और उसके गुण यही है. So this third step is the biggest unknown secret of spirituality, which people have missed. And this is what the opportunity for all of us who have understood this third step, to live life like that, like a lucid life, lucid dreaming life. Change the direction of life towards and on behalf of who you really are. So the character can now not worry about what happens to Hanuman or in the play. Play ko jo hona hai ho, it is okay. But now the play is moving according to what the dreamer wants. And whatever that looks like in your life, आप सोच के देखो कि मेरी life में इसका क्या मतलब है. Everyone has a different variation of this story, cosmic story that is going on. For someone it is, taking care of their grandchildren. For someone it is taking care of their mom and of providing healing.
For somebody, it is taking care of family and the world. Whatever it is, whatever that dream is, ऐसी कहानी जियो जिसको सुनकर मिले चैन तुम्हें मेरी जान वैसी कहानी जियो. यहाँ हम कोई पर्टिकुलर कहानी से कोई हमारा कोई स्पेशल मतलब वो नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट कि ऐसे ही जीना है आपको, या ऐसे ही करना है, या ऐसे ही जीना है, या ऐसे ही खाना है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही बैठना है. जो भी कहानी जिससे आपको चैन मिले, वो कहानी रचो, वो कहानी में हिस्सा लो और वो कहानी को जियो. और रच ना पाओ तो फिर जो रोल मिला है उसी में आनंद लो. उसी में आनंद लो, उसी में आनंद लो कि नोइंग दैट जो भी रोल हो रहा है अल्टीमेटली तो उसी का सपना है भाई. सही उसी है, का सही है. सही है. आप सही है. आप सही कह रहे हो. You are right. Wonderful. So, any thoughts, questions? Just amazing. Yeah, you know, I know. Every time I sit down to be with everyone, मैं सोचता हूँ यार सब कुछ तो कह दिया, अभी क्या कहूँगा. आप मैं जाने कितने तरीके आप ढूंढ लेते वही बात बताने की. वही और मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि नए नए तरीके आते ही जाते हैं, भेजते ही रहते हैं. वो सपना देखने वाला भेज ही रहा है कि नहीं अच्छा ऐसे सुनाओ, ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, ऐसे बताओ. So we are lucky that we are able to bring that. And the challenge is how to bring it into life all the time. And that is the Insta meditation. How to bring that to this? How to bring that to this? How to bring that to this? Wonderful. Anything else? Great. बोलो. मैं आपको वर्ड्स भेज रही हूँ संजीव जी व्हाट्सएप पे, देख के गाना पूरा गाइए. अच्छा. Okay, let's see. See if you can open and पूरा गाना गाइए. मजा आएगी. क्या? आया नहीं अभी तक. क्या? अभी तक नहीं आया है. पक्का आपको ही भेजा ना. हाँ आया अभी, देखिए. सॉरी नहीं है वर्ड्स. नहीं है बट ये कुछ अलग है. ये कुछ अलग अलग है. सॉरी. फनी इस है. चैट बॉक्स में भी नहीं डाला दिस इज अ हुआ है ना. डिफरेंट सॉन्ग, कंप्लीटली डिफरेंट सॉन्ग. I'm so sorry. हाँ अभी ये वाला होगा शायद. ये शेयर करती हूँ. ये वाला देखिए, ये परफेक्ट है. No, एक. I found it. Okay. Yeah. This one is perfect. Chumru. Yeah. I sent you. Oh, such a beautiful imagery. Imaging also देखो कैसा है. So this is describing nothing but the Fine. divine dream. This is the divine dream. Just listen from that point of view now. ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी. आ
सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी है। मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे, this I've never sung but let's see. ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी। And then this, of course, this is the third step. थोड़ी सी रात बीती, थोड़ी सी रह गई, खामोश रुत न जाने क्या बात कह गई। तो this is also very significant. खामोश रुत न जाने, because all these kind of thoughts emerge in meditation, emerge in silence, emerge when we are connected with ourselves. खामोश रुत न जाने क्या बात कह गई, मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी है। मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐ मेरे दिल बना कोई कहानी, सिर्फ सुना नहीं, बना कोई कहानी। ऐसी कहानी बनाओ। लेट लाइफ बी मेड इनटू दिस स्टोरी ऑफ लव। और फिर सुनाना भी जरूर सुनाना। ब्यूटिफुल, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरिओम तत्सत। चलिए, हाँ बताइए। ये सुर, ये सत्संग और इसका आनंद, वाह क्या कहना है। क्या बस एक कहना? नदिया है जिंदगी, झूम के बहना है। झूम के बहना है। वाह वाह वाह। झूम के बहना है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। इट्स हाई टाइम, हाई टाइम, हाई टाइम। द टाइम इज नाउ। ब्यूटिफुल। और कहीं हम, आहे बाहर आई। थैंक यू, थैंक यू। सो ये कहीं कहीं हम खो जाते हैं, तूफानों में बह जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को वापस लाते रहें। संजीव, हाँ, आप आए बाहर आए, आपसे ज्ञान से हम बाहर आए। आपके ज्ञान से हम बाहर आए।
क्या बात वाह वाह, क्या बात है। चलो सभी कवि बन रहे, वेरी नाइस। हाँ, हम दिल से बाहर आ गए। दिल से बाहर आ गए, एग्जैक्टली। और हमारी हमारी जो छोटी सी दुनिया है उससे बाहर आकर कुछ नई बड़ी दुनिया देख रहे हैं। वेरी नाइस, नजरिया वंडरफुल, बदल गया, दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट इज व्हाट मेक्स इट ऑल वर्थ इट। मेक्स ऑल दिस वर्थ। वेरी गुड, ग्रेट। तो we will see you on Tuesday, and meantime, Hari Om Tat Sat.